Hi, good evening everyone. Namaskar dosto. How are you doing? I hope you guys are doing great. Welcome to this live session on Learn to Trade and Learn to Invest series, which I've been conducting in my YouTube channel. I simply loved recording that series, both Learn to Trade and Learn to Invest. और मुझे यकीन है कि आप लोग अगर सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा, मिल रहा होगा, और नहीं देखा तो जब आप देखेंगे तो मिलेगा फॉर श्योर. Well, today's session is going to be for half an hour. I'm going to keep the forum open for questions. Generally, I'm more selective in answering questions with respect to stocks, but I'll be happy to answer the questions related to stocks if you have any. More on the technical side, and anything which you have in mind with respect to fundamentals or any question which you have related to learn to trade and learn to invest, I'll be more than happy to participate in that Q&A session. So this is going to be half an hour session. Not going to talk about the market. I'm going to record anyways the weekend trading strategy video just after this, so that tomorrow you can get that video also recorded from me. तो चलिए आज अपने स्पेंड करते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम आवर लर्नर्स. तो और अगर आप स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बाद में जवाब दूंगा. तो अभी आई वांट टू काइंड ऑफ टेक क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल who are more conceptual questions. Okay, whoa, let's start with this one. Kayur Somani, he has a very good question that sir Paytm के अंदर में लॉस बुक करे ना इसको होल्ड करे. Okay, it's a very important question because a lot of you may be kind of stuck with Paytm, or probably you would be finding opportunities to invest in Paytm. So it's a very important question for you, and let me try to answer this question. So जब भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो चार्ट के साथ देना चाहिए, है ना, नहीं तो वो थियोरिटिकल हो जाता है. सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. सो जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज. शेयर दिस स्क्रीन. ऑलराइट, सो हियर वी आर. I hope you guys can see my screen, and let me bring the chart here. Fantastic. So अब आपको चार्ट भी दिख रहा होगा और आपको मैं भी दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा जो केयूर ने हमसे पूछा है. ठीक है, तो पेटीएम. सो दो थॉट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करते हैं. पहला, पेटीएम बीइंग दी फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, वेदर यू शुड बाय, होल्ड और यू शुड सेल इट. ओके, और दूसरा फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव कि अभी मोमेंटम क्या लग रहा है एंड व्हाट शुड वी डू इन दिस मोमेंटम ऑफ पेटीएम. तो पहला, एक बार 2 आवरली और चार्ट की सेटिंग पे दीजिए. ओके. सो पहली बात, हम लोग जब पेटीएम की बात करेंगे तो फंडामेंटली द रीजन व्हाई यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन पेटीएम इज टू बिलीव दैट इसका लॉन्ग टर्म हमको एक मेजर advantage मिल सकता है as a company, because they have developed a lot of unique things as a platform, and a possibility from a payment system to a eventually becoming a full-fledged financial services company. So there is a potential which can happen. तो आपने अगर पेटीएम में इन्वेस्ट किया होगा तो ये आपका माइंड में चल रहा होगा कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, यूजर्स बहुत इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, एंड पॉसिबिलिटीज है. अगर आपके पास यूजर्स बहुत है और यूजर्स का एंगेजमेंट काफी है तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, बट दैट मोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑब्वियसली टेक्स टाइम. सो इफ यू हैव टेकन फंडामेंटल इन योर माइंड, then irrespective of stock price going down, ideally you should be happy that stock आपको सस्ते में मिल रखा है. But if you have not taken fundamental into account, and if you are probably just rely on other people who have just told you to buy or to sell Paytm, then maybe you will have to figure out, उनसे बात करनी पड़ेगी जिन्होंने आपको लेने बोला था, and you have to find out कि अभी मुझे पेटीएम में क्या करना चाहिए. I mean, jokes apart. अब अगर मुझे इसका आंसर देना है तो मैं चार्ट देखूंगा, बिकॉज आई एम अ मोमेंटम मार्केट पार्टिसिपेंट. तो अगर मैं इसका चार्ट देखूंगा, या अगर मैं इसका चार्ट देखूंगा,
So this is Paytm daily chart, okay? And people who can't understand this template, मेरा learn to trade series में template मैंने सिखाया था session number 31. So if you don't understand this, I think you probably have to look at this, okay? So ये डेली चार्ट है. डेली चार्ट में 21 पीरियड, दिस इज 21 पीरियड RS, ओके, दिस इज 55 पीरियड RS. तो लंबी स्विंग के लिए आई फॉलो 55 पीरियड RS, एंड फॉर अ शॉर्टर स्विंग आई फॉलो 21 पीरियड RS. सो डेली के अंदर में 21 पीरियड RS इज ग्रीन, एंड 2 आवरली चार्ट के अंदर में RS इज 55 period RS is positive. That means from a short term momentum perspective, Paytm is a buy. Okay, तो बाय कब तक है? जनरली मेरा मॉडल ये बोलता है कि अगर 55 पीरियड RS 2 आवरली वाला जीरो के ऊपर है और सुपर ट्रेंड चाहे वो प्लस है कि माइनस है, तो अगर this RS goes below zero and super trend is negative, then I will sell. Otherwise, I'll hold on to this stock because इसके अंदर में अभी short term momentum आ चुका है. So now to answer your question, Keyur, was that investment in Paytm an investment? This answer you have to tell me. Okay, you have to find out an answer to this question. मैं आपको इस question का answer में help नहीं कर सकता हूँ. So was it for an investment? ये आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट था या वाज इट फॉर अ मोमेंटम? अगर मोमेंटम का पार्ट था तो आप शायद पहले एग्जिट कर गए होते. आई शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. क्या कब पहले आप एग्जिट किए होते? लेट मी जस्ट शो यू दिस. सो फ्रॉम अ RS perspective, this stock has been negative RS from these levels, consistently negative RS, and at the same time you'd see the 2 hourly RS has also been negative for long period of time. इनफैक्ट ये पेटीएम अगर डेरिवेटिव्स में होता तो पीपल वुड हैव मेड सो मच मनी बाय शॉर्टिंग एवरी टाइम इट वेंट अप. ओके, सो मोमेंटम में डेफिनेटली नेगेटिव था, आप एग्जिट कर गए होते. तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो कोई ना कोई रीजन से किया होगा, और अगर आपको रीजन नहीं पता है और आपने फिर भी कर दिया होगा तो फिर ये आपकी गलती है. डोंट रिपीट दैट मिस्टेक बेसिकली. सो केयूर इज सेइंग दैट yes, it was an investment believing in its fundamental. Well, अगर वैसा है तब फिर आप बेच नहीं सकते, बिकॉज अगर फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है तो आई थिंक यू probably can continue holding on to it, because fundamental if remains the same, you are also the same. Okay, okay, Kundan Kumar is saying that car trade के बारे में बताएं. All right, so let us see the chart. So car trade tech, so what's happening there? इंटरेस्टिंग. तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कार ट्रेड टेक के अंदर में पेटीएम से बेटर मोमेंटम है. सी 2 hourly चार्ट हैज बीन शोइंग स्ट्रेंथ फॉर सम टाइम, एंड 21 पीरियड RS हैज आल्सो बीन शोइंग स्ट्रेंथ फॉर सम टाइम. तो आई वुड ऑलवेज बाय दिस स्टॉक. हर ब्रेकआउट पे ये एक बाय कैंडिडेट है, नॉट अ रिकमेंडेशन, बट यू सी वेरी वेरी क्लियरली कि इसके अंदर में ये प्रीवियस स्विंग हाई इसने तोड़ा है. इसके अंदर में क्लियरली एक बाइंग मोमेंटम है विच इज फार फार स्ट्रॉन्गर देन पेटीएम के अंदर है मोमेंटम. सो आई विल प्रोबब्ली बाय दिस स्टॉक. ऑलराइट, ओके, एचडीएफसी की बात करते हैं. गाइज, my discussion with you guys should not be considered as a stock recommendations or stock discussions. Basically, I want to show you the power of momentum and why all the retail investors should also start looking at momentum, because value investing is a very long-term journey which takes a lot of time and an effort and understanding of the market to implement. But momentum is relatively easier. Momentum में सबसे बड़ा differentiator क्या होता है? Let me just switch off the screen sharing. Momentum में सबसे बड़ा differentiator होता है exit. जो momentum में रिवर्सल ऑफ द मोमेंटम में एग्जिट सबसे पहले करता है वो बचता है. हाँ, मोमेंटम के अंदर में एंट्री इंपॉर्टेंट है, बट एंट्री तो आप ब्रेकआउट पे भी कर सकते हो, रिट्रेसमेंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेयर इज वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर में एग्जिट नहीं होता है, इट इज लार्जली एंट्री एट एवरी प्राइस पॉइंट. ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक कॉल हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, व्हिच इज HDFC. So देखिए, classic, I mean obviously it was a news driven and lot of change in the momentum happened because of the news. So stock price went up and there was a distribution
and now it has gone down, so momentum has gone down again. So this stock definitely has gone into a very very bad phase. तो मुझे नहीं लगता है कि एच डी एफ सी बहुत जल्दी से रिकवर करने वाला है. अनफॉर्चुनेटली एच डी एफ सी हैड टू सी दिस फेज बिकॉज मार्केट इज नॉट अप्रिशिएटिंग द मर्जर विद एच डी एफ सी बैंक. तो मुझे लग रहा है इस पर थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज कहीं ना कहीं एक मेजर डैमेज हो गया है in terms of investors' confidence of invested in this stock. So it will take some time for the recovery of this stock. I will suggest अगर ये stock अपने previous swing high low which is this इसके नीचे चला जाए तो probably I will exit this stock. All right. Okay. Let us thanks. Okay, so what is okay? There's a conceptual question from Nimish. So, what is the exact relative strength strategy you use for entry and exit? What do you see beyond this? Okay, so इस पे मैंने session number 31 में sorry guys, I'm having tea along with this session, so I hope you won't mind. Learn to trade के session number 31 के अंदर में I've discussed this RS strategy. So just for the sake of repetition, I would like to highlight that the RS strategy is basically the RS indicator which I use, which is trying to tell me that which stock is outperforming vis-a-vis market, which is Nifty. For me, Nifty is important because Nifty is the main indicator where India trades, and that's why Nifty is very good benchmark. So if RS 55, which is a last 55 दिन का relative strength, RS 21, which is basically last 21 दिन का relative strength, और 2 hourly RS 55 is basically last 55 2 घंटे chart का relative strength. So my entry is very simple. There are two forms of entry. One is breakout entry. So whenever a stock is giving you price breakout with a strong RS, that means RS greater than 0, then you basically enter the stock. You look at the daily chart and enter when you are trading for a longer swings. And you look at the 2 hourly charts and enter when you are looking for the shorter swings. So stocks where I want to play shorter swings, I will look at 2 hourly chart for entry and exit. And stocks where I play longer swings, that means swing for a period of say 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, I will use them for the purpose of playing the longer swings. Okay, so this is daily chart and this is 2 hourly chart. In fact, stockage club के अंदर में, which is my premium community of like-minded stock market people, the stockage club के अंदर में what we do is the stockage club is hosted in stockage social platform. So social.stockage.com के अंदर में, which is a premium product. यहाँ पे वी कीप ऑन डिस्कसिंग स्टॉक्स जिसके अंदर में कुछ ना कुछ आरएस का स्ट्रेंथ दिख रहा है या वीकनेस दिख रहा है. सो एंटायर टीम इज इन्वॉल्व्ड इन दैट डिस्कशन. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कीप ऑन पोस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टॉक आइडियाज, नॉट रिकमेंडेशंस but basically stock ideas where some kind of a RS based activity is there. Okay, so in case you want that real-time guidance from us with respect to RS or any other concept for that matter, fundamental, technical, kuch bhi, so I think becoming part of stockage club is probably a good idea. Okay, so RS तो मैंने आपको समझा दिया. चलिए अब आगे चलते हैं. Okay, सर टाटा स्टील 1356 पे होल्डिंग है. व्हाट इज योर व्यू? ओके, सो देखते हैं अभी क्या प्राइस चल रहा है. देखिए टाटा स्टील, यू सी द चार्ट, this is your RS 21 and this is 2 hourly RS. So 2 hourly RS is also is giving a conflicting signals. Okay, and 21 period RS is also kind of not showing a strength, but 55 period RS के अंदर में अच्छा strength है. And Tata Steel is trading near its 100-day moving average, and the 200-day moving average is this is your 200. This is 100-day moving average, and this is 200-day moving average. कहाँ पे? यहाँ पर है 200-day moving average. तो 100-day moving average यहाँ पर है. तो if you are holding टाटा स्टील 1356 पे अगर आप होल्ड कर रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत हड़बड़ी में ऊपर जाएगा। मैक्स व्हाट आई सी इज दैट 1310 के लेवल पे इसमें वापस से सप्लाई आ सकता है, बिकॉज ये अपना 21 पीरियड मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है, 55 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वीक यहाँ से हो सकता है। मुझे क्या लगता है, चार्ट को ये लगता है। तो आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल। शुड यू बुक लॉस? जब तक ये RS 55 एंड ऑफ द डे जीरो के ऊपर है, लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए। सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज विच यू कैन डिप्लॉय इट अगेंस्ट द शेयर्स, यू कैन बाय ऊपर का कॉल ऑप्शन। ओके, कोई कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो थोड़ा प्रीमियम का कमाई भी हो जाएगा। सो लेट अस सी कॉल ऑप्शन, किस कॉल ऑप्शन के अंदर में सबसे ज्यादा ओआई है। सो लेट अस गो टू स्टॉक एज। So let's go to option chain. So सबसे ज्यादा ओआई कॉल ऑप्शन में खड़ा है यहाँ 1400 में, और उसके बाद है 1300 में। और चेंज इन ओआई अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई आया है 1300 में और 1320 के अंदर में कॉल ऑप्शन में। तो चांसेस है कि ये 1300 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बिकॉज ओआई काफी सिग्निफिकेंटली कॉल साइड में इधर में बिल्ड हुई है। तो आई विल प्रॉब्ली ऑल्सो सेल मे बी 1320 कॉल। सो 1320 का कॉल मतलब ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रॉब्ली आई विल सेल। द रीजन बीन वेरी सिंपल दैट अगर मैं कॉल बेचूंगा तो मुझे जो शेयर लिया हुआ है वो मुझे पार्शली उसका कमाई भी चालू हो जाता है। तो अगर आपको शेयर रखना है तो आप रख सकते हैं। RS 55 एंड ऑफ द डे स्टिल पॉजिटिव, बट ट्राई टू सेल ऊपर का कॉल एंड रियलाइज सम एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ दिस होल ट्रांजेक्शन। कोल इंडिया, यार ये पीएसयू ना बड़ा ही परेशान करते हैं। ये पीएसयू दिखाते हैं तेजी, बट फाइनली इनके अंदर में तेजी सस्टेन नहीं होती है। तो मेरी तो एडवाइस रहेगी कि ये पीएसयू से दूर रहिए अनटिल एस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आरपी सिंह जी का क्वेश्चन है, विवेक जी फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन स्कैन्स को लेके कुछ कॉम्बो स्कैन बनाइए, मैंने ट्राई किया है बट हुआ नहीं। फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन स्कैन में कॉम्बो मत बनाइए, कोई फायदा नहीं है। आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज ऑलरेडी इनसाइड दैट स्कैन। तो जब आप स्कैन के अंदर में जाते हैं, यू गो टू फ्यूचर एंड ऑप्शन स्कैन, और फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन में जो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग्स है ना, अगर आप उसी को देख लोगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीवरी एंड ओपन इंटरेस्ट। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू ट्रैक। डोंट मिक्स एंड मैच विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट येट। Performance of Nifty versus momentum return. Obviously, momentum return will give you far better return because the risk profile is also high. तो अगर निफ्टी का रिटर्न 14-15% CAGR होगा, तो मोमेंटम का रिटर्न कम से कम 18-19%, 20% CAGR होना ही चाहिए कम से कम। Okay, Max Healthcare Institute. So let's see the chart. Wow, this is a beautiful chart structure. Strong across all time frame. 2 hourly में भी strong है. I think the stock will retrace from these levels. So when the stock price comes down around these levels, I think this is a good price to buy. But अभी से भी थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है, because there is a fair bit of momentum witnessing in this stock. वॉल्यूम भी अच्छा है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है, काफी एक्टिविटी काम हो रही है। लेट अस सी द डिलीवरी। लेट अस गो टू मैक्स हेल्थ केयर। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितना अच्छा डिलीवरी हुआ है। उस दिन का विवैप है 401 का। तो मुझे लगता है कि 401 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बी ऑन द लॉन्ग साइड। सो दिस इज 406। तो आई थिंक 401 का
मे बी 399 का स्टॉप लॉस पे आप इस पे काम कर सकते हैं. What happened to Polycab? So देखिए, what happens if these kind of stocks which are basically hyper momentum stocks, इनमें कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत टाइट स्टॉप लॉस इनमें रखना पड़ेगा. Even though they will show strength, but possibly some kind of a position unwinding can lead to a massive fall in these stocks. तो stop loss is the only thing which will save you from these stocks. तो अभी इसमें फॉल आया है लास्ट में, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट द फैक्ट इज कि ये अब फॉल आ गया है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है. दिस काइंड ऑफ एक्यूट फॉल इज क्वाइट डेंजरस, तो वन शुड एग्जिट even if it has a loss. You should not be the last one to exit these stocks. BSC Limited. हाँ, BSC लिमिटेड एक्चुअली चला काफी अच्छा था, बट ऑफ लेट इसने वीकनेस दिखाना चालू कर दिया है. लुक एट दिस 2 hourly चार्ट इन RS21. सो इनफैक्ट मैंने सोशल में भी इसके बारे में बात की थी. तो जब ये चल रहा था तो हम लोग काफी इसके बारे में बात कर रहे थे. फिर देन व्हेन द स्टॉक स्टार्टेड करेक्टिंग, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि ये नेगेटिव मोमेंटम में चला गया है. So yeah, so 1 week ago I talked about this कि BSC has also started showing weakness. तो ये उस समय प्राइस करीबन 900 चल रहा था और अभी प्राइस हो गया 840. तो RS का the advantage of RS is it is not just a utility which helps us to see the stocks on the long side, but also जब ये weakness momentum में आ जाता है स्टॉक, तब आपको शॉर्ट साइड में भी स्टॉक दिख जाता है. तो स्टॉकेज सोशल के अंदर में इस तरह के आइडियाज में जनरेट कर करके मैं बताता रहता हूं कि किस स्टॉक के अंदर में क्या चल रहा है. कोल इंडिया लिमिटेड में बताएं. कोल इंडिया का मैंने बता चुका आपको कि थोड़ा सा ये PSU स्टॉक्स के अंदर में प्रॉब्लम है कि ये लोग में मोमेंटम आता है फिर वापस से डाई डाउन हो जाता है. तो मैं इसलिए PSU स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ. कोल इंडिया में मैंने कई बार कोशिश की है पैसा बनाने की, बट इसमें मोमेंटम में पैसा नहीं बनता है. दिस इज टिपिकली व्हाट हैपेंस इन कोल इंडिया. अचानक से बूम करके कोई इसको आके बेच देता है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अवॉइड कोल इंडिया टाइप ऑफ स्टॉक्स. ओके, स्प्लिट के बाद स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं करते? वेल, वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई स्टॉक्स डोंट परफॉर्म आफ्टर स्प्लिट इज बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और एक परसीव्ड आ जाता है कि लिक्विडिटी बढ़ गई है. क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो बायर्स और सेलर्स के क्वांटम भी बढ़ जाते हैं. ऑल्दो इसका लॉजिकली कोई रीजनिंग नहीं है, बट जनरली क्या होता है स्प्लिट के बाद में शेयर, जनरली कंपनीज स्प्लिट क्यों करवाती है? बिकॉज दे वांट टू शो द प्राइसेस लो so that more buyers are getting generated. But उसका काउंटर लॉजिक ये है कि सप्लाई बढ़ गया तो उसके कारण possibility there is a selling happening because lot many people have many stocks now. I think so many questions with respect to Coal India. Okay, Borosil Renewal. Okay, Borosil Renewal. So stock with a very strong momentum. There is no reason why I should not hold on to this stock because it has the strong momentum indication. And obviously stock अभी बहुत ऊपर चला गया है, बट आई एम होपिंग कि ये नीचे आ जाए करीबन 730 740 पे, तब हम इंटर कर सकते हैं. और द बेस्ट वे टू डू इज दैट छोटा छोटा क्वांटिटी करके चालू करिए, बिकॉज एक ही प्राइस पे सारा शेयर आपको सेम वैल्यू पे मिलना मुश्किल होता है. तो मे बी यू कैन स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दीज हाईली मोमेंटम स्टॉक. बट ये इसमें एक्टिविटी काफी है. प्लस लेट अस सी द डिलीवरी डेटा. इंटरेस्टिंग. और पूरे वीकली डिलीवरी कितना हुआ है देखिए. वीकली डिलीवरी भी कितना इंप्रेसिव हुआ है. जनरली इतना डिलीवरी नहीं होता है जितना इस वीक में हुआ है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट ऑब्वियसली इसका प्राइसेस काफी बढ़ गए. द वीवैप इज 727. तो 727 कैन बी यही लेवल है. तो आई थिंक यहाँ के ऊपर में काफी स्ट्रेंथ है इसमें. तो नीचे आएगा तो वन कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज डेफिनेटली इट हैज ऑलरेडी गॉन अप सिग्निफिकेंटली.
अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि आज लर्न टू इन्वेस्ट. Okay, so one thing I wanted to inform you guys that today unfortunately Learn to Invest का वीडियो नहीं आ पाएगा 7:30 because last week I was traveling, so I was not able to record a video for you guys. So you pardon me for that. Next week करेंगे, और next week जो वीडियो होगा it will be on EV इलेक्ट्रिक व्हीकल. ये पूरा इकोसिस्टम के ऊपर मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ. तो यू विल गेट इमेंस नॉलेज ऑन दिस ईवी थिंग. सो it is taking some time, but I am sure that you will appreciate me putting an effort, and you will watch the video next Saturday 7:30 p.m. Okay, now let's see NIIT. Anyone who has any question with respect to RS and stock idea, etc., etc., please join Stockage Social. वहाँ मैं anyways ये सारे discussions को करता हूँ. तो if you want if you want us to give value there, I think best is Stockage Social का part बनिए, और definitely you will have thorough understanding of RS as a concept. So NIT again a strong stock, has been strong for some time. 2 hour 21 period के अंदर में थोड़ा सा strength दिखा रहा है, और 2 hourly में वापस momentum आ रहा है. So I will definitely find opportunities to buy this stock. इसके ऊपर में जाए, क्योंकि ये जैसे इसका स्विंग लो था, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर थोड़ा चांसेस है कि यहाँ से वापस नीचे जा सकता है. तो इट्स इन अ वेरी प्रोबेबल क्रक्स एरिया. बट ये इसके ऊपर चला गया, और अगर बाइंग आ गया तो इसके अंदर में मोमेंटम आ सकता है. सो प्रीवियस स्विंग हाई इज हेयर विच इज फार अवे. तो इसके ऊपर गया और बाइंग आ गया, देन डेफिनेटली वन कैन लुक एट एनआईटी एज वेल. Tried it. It was one of my favorite stocks. फिर मैं इसमें से एग्जिट कर गया था. अभी देखते हैं इसका क्या प्राइस है. मोरलेस मैं इसी भाव पे एग्जिट किया था. प्रॉब्लम यही है कि ये अभी भी इनडिसाइसिव मोड पे है. सो अगर कोई स्टॉक इनडिसाइसिव है, so for me it does not make sense, because why to participate in a stock which is indecisive? Yeah. Okay, there is question. Okay, there is no question. He has just given $100. So thank you so much, Neil's Creation. Zomato. Okay, so you see all these major charts, Zomato, Paytm, ये जितने भी न्यू जेन बिजनेसेस हैं, ये सारे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे. तो लेट्स सी क्या होता है. बट हाँ, एक मोमेंटम का एक इंडिकेशन है कि ये कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर की तरफ ये लोग जा सकते हैं. सो अभी तो नहीं. आई एम ओके टू बाय Zomato एट हायर प्राइस, बट नॉट नाउ. Okay, Pranjal is saying that I can teach you stock market technical analysis after learning with you. Yes, really. Okay, that's good for you. Okay, I'll take the last question. Tata Power. Yeah, so very interesting stock. So I'll be buyer in this stock, because 2 hourly में भी strength है. एंड ये सब स्टॉक्स क्या है ना, आपको SIP मोड पे रखना पड़ेगा. कोई भी एक प्राइस पॉइंट पे ये सब स्टॉक्स को आप एक बार में लेके बड़ा पैसा बना लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए. तो जब तक ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तब तक इन स्टॉक्स के अंदर में आप अपना SIP पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज, माय सजेशन इज, व्हाट यू कैन डू इज कि एक आप अपने लिए कोर पोर्टफोलियो बनाइए विच शुड बी लाइक SIP ऑफ बिग कंपनीज लाइक मदर कंपनीज और the very convincing stories which you have taken, and the other should be the SIP in momentum stock. So Tata Power एक तरीके का momentum है, तो उसमें SIP करते रहिए जब तक RS 55 RS के 0 के ऊपर है. और अगर RS 55 0 के नीचे चला जाता है, don't probably either exit or stop the SIP. All right, so this was the short and sweet half an hour session with you guys. I hope you liked it, and I'll try to conduct these often.
I will release the weekend video tomorrow. And today, unfortunately, Learn to Invest is not coming. So I think that should be okay with you. And next Wednesday, I'll release a very, very unique video on what I've done is I have recorded a video which will explain you for what age category equity investment should be done and how much. So एक 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, किस साल के किसके लिए कितना स्टॉक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल बताया. तो द वीडियो विल बी रिकॉर्डेड, विल बी रिलीज नेक्स्ट वेंसडे. एंड जो स्टॉक के साथ में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि मंडे को 25 तारीख को रिलीज होगा. तो दैट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो टू वॉच. And people who are not yet part of Stockage Social, please become part of Stockage Social and learn from us on real-time basis. And there are enough stock ideas which we discuss, which will help you to earn from us on a real-time basis as well. To become part of Stockage Social, you have to go to stockageclub.com and enroll for this plan called where you get to learn, analyze, and collaborate with us for real-time learning and earning from our team. So I hope you find all these initiatives of ours interesting, and I hope you will become part of this Stockage family, which we are extremely proud of. Thank you. Good night, everyone. Have a great weekend, and please take care of yourself. Bye-bye.